Cracks within the Aam Aadmi Party are quite out in the open now. Party leader Vinod Kumar Binny has openly criticised the party, even going as far as to call Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal a liar. Well, sources are telling your channel that Binny is likely to quit the party today. Some other leaders have also registered their dissent by questioning AAP's leadership. These latest developments putting the Delhi Chief Minister in a huge fix. Rebellion brewing within the Aam Aadmi Party is posing a threat for Team Kejriwal, with MLA Vinod Kumar Binny openly criticizing the party. सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया है, करनी और कथनी में फर्क आ गया है कि जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें सारी चीजें डिस्कस होती हैं और डिस्कस होने के बाद अगर आप जनता की जो प्रॉमिसेस करके आप जिसके बीच में आए हैं और उन प्रॉमिसेस से आप भटक जाएंगे तो न चलिए, हम तो सिर्फ मुद्दों के साथ जुड़े हैं इस पार्टी से। जो चीजें हो रही हैं, जो जनता के साथ कहीं ना कहीं छल हो रहा है, वो हम जरूर उजागर करेंगे। The leader is going to address a news conference today, and sources say that he might announce his exit from the party, which is likely to throw a spanner in the stability of the Delhi government. Aam Aadmi Party will respond after that 10 a.m.'s very crucial press conference by AAP MLA Vinod Kumar Binny. He's most likely to hit out at Kejriwal, saying there's no democracy within the party and that all the promises made till now is very different from the work that is being done on ground. But Chief Minister Arvind Kejriwal has not taken the attack lying down, questioning Binny on why did he not raise his issues at party meetings. पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। सारे 70 के 70 कैंडिडेट के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी, भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी। वहाँ उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। But it's not just Vinod Kumar Binny who's miffed with the party. Two other prominent leaders, Mallika Sarabhai and Tina Sharma, have also voiced their dissent. Attitudes that Mr. Vishwas shows there are very worrying because it shows anti-Muslim, anti-women and anti-gay rights. लोगों से बात करती तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि 2013 के मैनिफेस्टो को अभी आपने पूरी तरह एंडोर्स नहीं किया है और आप 2014 के मैनिफेस्टो पे हमसे बात कर रही हैं। महिला कमांडो कहाँ हैं जिनकी हमने बात की थी? महिला इशू क्यों इतने नगण्य हो गए हैं पार्टी में, क्यों सेरेमोनियल हो गए? A large number of people are also, walking up to me wherever I go, and are confused about the confusing messages that are coming out, and it doesn't look like a measured response. It looks a little bit of a political response from the AAP in view of the assembly elections or the Lok Sabha elections. While the Aam Aadmi Party struggles to set its house in order, the threat of Vinod Kumar Binny pulling the plug on them looms large. The questions now are, would Arvind Kejriwal want to keep a rebel MLA within the party even though Lok Sabha elections are approaching? And finally, if at all VK Binny decides to resign, which party would he be joining? Would it be the Congress or the BJP? All eyes now will be on that crucial press conference today, and if Arvind Kejriwal will manage to resolve the issue before it gets out of hand. With Pooja in New Delhi, Sneha Jaswal for Times Now.